So, good evening, everyone. Good afternoon. Yes, welcome back to your own magic book session that we have started yesterday. हमने introduction पढ़ी थी थोड़ी सी, and now we will start more. I think we can be in dual language here now because I think I don't know whether CC and Sylvia are joining this book again or not. I'm not sure. तो बीच बीच में मुझे comfortable होगा तो I will come back to Hindi for some आ explanation. रही है वो भी Okay. याद नहीं मुझे करती 5:30। हाँ, मैं तभी तो रिमाइंडर भी डाला था। मैंने मैं फोन नहीं हाथ लगाया। सैटरडे का 5:30 फिक्स है बिल्कुल। मतलब ये 5:30 रखेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, मतलब भूले ना हम्म, था। ओके। हम्म, तो मैं बोल रही थी कि वी विल स्विच टू हिंदी ऑल्सो इन बिटवीन, जैसे जैसे हमें कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आई कैन सी हम्म, मोस्टली पीपल नो हिंदी हेयर, और आई कांट सी सीसी सिल्वी ज्वाइनिंग एनीवेज। हम्म, इफ दे विल लिसन टू रिकॉर्डिंग एंड इफ दे विल से कि नहीं हमें बीच में इशू हो रहा है, आप लैंग्वेज चेंज कर रहे हो, देन आई विल हम्म, कम बैक टू इंग्लिश। ओके, हम्म, ठीक है। ओके। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम मतलब में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम बहुत कंफर्टेबली एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस में, तो हिंदी में। इट्स ऑलवेज बेटर। ठीक ओके, है। सो हम्म, सो लेट्स गेट बैक। हमने यहाँ पे छोड़ा था कल, जो एक बहुत ही सीक्रेट जो रिवील हो रहा है, राइट? सो व्हाट सीक्रेट इज बीइंग रिवील्ड हियर? Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप एक एम्प्लॉयर हो जिसके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और जिसमें से कुछ एम्प्लॉयज तो बहुत ही सिंसियर हैं, और कुछ एम्प्लॉयज हैं जो आपको लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं या गप्पे मार रहे हैं या इधर उधर टाइम उनका इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ध्यान है, वो पूरा का पूरा उन एम्प्लॉयज पे है जो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? ग्रेटिट्यूड करने की जगह आप बस यही बोलते रहते हो सारे एम्प्लॉयज बेकार है, इनको तो टाइम वेस्ट ही करना है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरे यहाँ पे, ये और वो। then what will be the result of that? Because you are not grateful for those people who are not who are performing well, you will also lose those people who are performing well, क्योंकि उनको भी लगेगा कि इसको तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, मे बी वो 2-3 हो, मे बी वो 2-3 हो जो अच्छे हो, बट आप उनके लिए भी ग्रेटफुल नहीं हो ना, आप तो कंप्लेन कर रहे हो उनके लिए जो नहीं है। तो व्हाट हैपेंस, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो whoever has gratitude will be given more, और अगर आप उन 2-3 लोगों को ही अप्रिशिएट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, then they will also recommend or refer more people like them, and then you will have an abundance. You will have an abundance of good employees in your company. So similarly, this is a rule applies for everywhere, even in your relationships, even in your money. अगर आप पास कितनी भी सैलरी आ रही है, अगर आप उसकी ग्रेटफुल नहीं हो और हर महीने सोचते हो यार कितनी कम सैलरी आ रही है मेरी, तो आप कुछ नहीं, वो जो मनी आ रहा है उसको भी धीरे धीरे लूज ही कर रहे होगे। रेदर देन अगर आप बहुत ग्रेटफुल हो कि हाँ एक शुक्र है भगवान जी, मेरे पास इतनी सैलरी आ रही है मेरी, वाओ वाओ वाओ, आई एम ग्रेटफुल। तो जितना व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर मनी, फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर फैमिली मेंबर्स, फॉर योर हेल्थ, एवरीथिंग एवरीवेयर, दिस इज द यूनिवर्सल रूल जो अप्लाई होता है। बाय द रेवलेशन ऑफ वन हिडन वर्ड, a cryptic test is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. So, and the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. Okay, so this is made, these words were written past ago, 2000 years ago, these were written, and this is as true today as it was 2000 years back. Okay,
So from the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. What does it mean? Remember when God proclaimed, this is the word from the Quran. Yeah, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. So, what does this mean? You don't have to worry or get scared about this whole line, because ये कर्मा का रूल है, सिंपल कर्मा का रूल है कि अगर आप ग्रेटफुल हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो यू विल बी गिवन मोर. और अगर यू आर सिन क्या होता है? किसी को भी हर्ट करना, किसी भी आपके फ्रॉम वन ऑफ एनी ऑफ योर डीड्स. If someone is hurt, you are complaining about someone, you're talking wrong about someone, or you're doing something which may hurt someone, is something where you may get that in return. That means your punishment will be indeed severe. Punishment means maybe you will get some health breakdown, or maybe a money breakdown, or whatever it is. It is the karma rule. Okay, so be very very careful about what we are reading here, because yahan pe they have written about Quran. So it doesn't mean that if you don't follow Quran, this is not applicable. This is applicable everywhere. It is scientific. It is scientific. Let's read how. It doesn't matter what religion you follow, or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. So they are describing a fundamental law of science and of the universe. Just a second. So if you follow that religion or not, if you follow that book or not, this is scientific. Okay. So Quran applies to you and your life. These words from Quran, they are describing a fundamental law of science and of the universe. So we will learn how this is a scientific law. So it's a universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law of see how universe is operating, how planets are moving around the sun, how everything is aligned in such a perfect manner, because this is the law which says like attracts like. Okay, so this applies to every cell, how our cells are in the living creatures, how we are living in such a beautiful world there where everything is planned according to this law. It is working according to the law of attraction. But how it works in your life, this law operates on your thoughts and feelings, because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. So, your thoughts and feelings are also attracting what they are thinking. Say, like attracts like. So, if you are thinking positive, you will attract positive circumstances in your life. If you are thinking negative, you will attract negative circumstances in your life. So, this every thought and feeling is also having an energy, a frequency. So, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. You can also, think about your life in the past where you whether you knew this knowledge or not before knowing it, you can see how you have attracted things in your life. Did you think about something and you got it? Think about those things. I always remember this example when I was in my 9th 10th standard. I always looked up to a college which is near to my house, an engineering college, and whenever I passed that,
I always thought I will study here. I had no clue how will I get there, how will I, but that was in my mind that I'm gonna study in this college only. I don't know how, but I got it. I got the exact rank which fit me into that college only. So how I attracted that into my life, because I thought that I would be going there. I visualized myself every time I crossed that this is my college. I'm gonna study there. My graduation engineering I will do from here. So how these things have worked out for me in the past, you can also think yours. And I never knew law of attraction at that time, but the law was there. The law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. So whatever you think, whatever you feel, you attract to you. It could apply to your job, it could apply to your business, it could apply to your life partner, anything, anything in your life. Okay. So if you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. So we should check our language, what we are talking. Are we talking negative about our things? Are we talking, you know, there are times when, especially in relationships, when we are not getting along enough with, maybe your partner or your mother-in-law, father-in-law, anyone in your family, what do? You mostly talk about it to someone who cannot do anything about it, who cannot even come into your life and change it. Suppose you have some problem with a relationship, you can talk to that person and just solve it. There is no need, there is no need to talk about that relation with someone else. You get a call, ओ यार बिल्कुल ही बकवास चल रहा है मेरा, तो बस पूछ मत, ऐसी चल रही है बस लाइफ, मैरिज तो यूं चल रही है, मेरे चाहे बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी लाइफ में से, मेरी जॉब खराब है, मेरा बॉस खराब है, बस यही सब बातें करते हैं हम क्या कर रहे हैं, और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यही सब बोल बोल के। तो सबसे पहला जो हमें स्टेप लेना है ना, वो यही लेना है कि शट शट योर माउथ, चुप हो जाओ, बिल्कुल कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, करनी ही नहीं है, एनर्जी देनी ही नहीं है वहां पे जो चीज ठीक नहीं है। क्या करना है, जो चीज है, जो भी है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। बट इफ यू थिंक अबाउट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, लाइक I love my job, my family is very supportive, I had the best, मतलब छोटा सा भी सपोर्ट अगर आपको मिल गया ना, तो उस पे अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगा दो कि वाओ वाओ वाओ, मुझे सपोर्ट मिल गया, मैं मेरे को देखो कितना सपोर्ट मिल जाता है, मैं जॉब के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे बच्चे संभाल रहा है मेरा पति, कुछ भी छोटा छोटा काम भी अगर कोई तुम्हारी हेल्प कर देता है, या फिर जॉब में, obviously you love your job, that's why you are into that job, okay, you love your job, don't talk about your boss being, anything, maybe he's not as good as you want him to be, but जॉब से तो प्यार करते हो, think about it, what things your job has given to you, लैपटॉप, मोबाइल, सैलरी, सबसे बड़ी बात तो सैलरी है ना, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of these things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. So ये law है, law समझते हो, law, law मतलब law of gravity, law मतलब है ही, ऊपर से कूदोगे तो गिरोगे ही गिरोगे, चाहे मानो या नहीं मानो. Similarly, law of attraction, whatever you are saying, whatever you are thinking, whatever
Wherever you are putting your energy into, you're attracting those circumstances in your life. So start saying what you want rather than saying what you don't want in your life. Okay? So you will have heard sayings like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of these sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the great scientist Isaac Newton discovered. Yeah, हमने सुना है ये, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, जो जैसा भरोगे, टाइप्स सुने हैं ना हमने बचपन से. Yes, yes. So ये We have. क्यों है? What is this? This is Mm. law. This is the Newton's third law of motion. सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में. सबने पढ़ा है? Every action always has an equal and opposite reaction. Yes, So yes, we have. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe. One of which says every action always has an equal and opposite reaction. So ball फेंकोगे तो वापस आएगी ना. जो बॉल आपने वॉल पे फेंकी, जिस फोर्स से फेंकी, एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स से वो आपके पास वापस आएगी. राइट? So when you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. तो यहाँ पे हमने उसको gratitude में डाला और बोला जितना दोगे, जितना थैंक्स दोगे, उतना ही वापस आएगा. Opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. Amount of gratitude you have given. तो कितना दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कितना मिलेगा. क्या दे रहे हो? Gratitude. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. See how scientifically she has explained it. Like, and very simple language, very simple language. Every action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. तो यहाँ पे फीलिंग्स की भी बात कर रही है वो. कितनी फोर्स से आपने वो ग्रेटिट्यूड दिया, दे तो दिया, बट कितनी डीपली उसको फील किया, कितना दिया, the more you will receive, the more you will receive. Okay, any doubt in up till now? Any doubt you have? Otherwise we will move on. Is it clear to everyone? Yes. Yes. Thank you. The golden thread of gratitude. So, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Yes, definitely have their gratitude at their core. You can read any of the books, maybe for Sikhism, Buddhism, whosoever is practicing, even Hinduism, everyone says शुक्र करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, है कि नहीं है? जो है उसमें खुश रहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा. ये सारी लाइंस हमने अपने पेरेंट्स से सुनी है, सबने सुनी है. तो ये कैसे आ रही है? थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये एक कुछ कुछ चीजें जो है अभी भी पास ऑन हो गई थी, कुछ तो उसमें से गायब हो गई, लेकिन कुछ कुछ लाइंस जो हम सुनते आए हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, सुन छोड़ छोड़, जो हो गया छोड़, अच्छा ही होगा, आगे कुछ बेटर होगा, हमेशा सुनते आए हैं ना हम ये सब, क्योंकि वो थैंकफुल थे. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, थैंकफुल है, एक्नॉलेज कर रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं हर चीज के लिए. तो सिमिलरली आप बुद्धिज्म में देखो, सिखिज्म में देखो, सब जगह शुक्राना की बातें होती हैं, थैंक यू की बातें होती हैं, ब्लेसिंग्स लिखने की बातें होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि इन सब में ग्रैटिट्यूड कोर है.
core है, क्योंकि gratitude is the only way to connect to the universe also and to receive more and more also. So Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. यहाँ मोहम्मद कौन थे? मुस्लिम मुस्लिम वो थे, इस्लाम के लीडर। उन्होंने क्या कहा? ग्रेटिट्यूड फॉर द अबंडेंस यू हैव रिसीव, जो भी आपके पास आज अबंडेंस है वो ही आपका इंश्योरेंस है कि अबंडेंस हमेशा रहेगी। अगर आप उसके लिए थैंकफुल हो जो आपके पास अभी है, तभी आप आगे अबंडेंस की इंश्योरेंस है आपके पास। दैट मीन्स जितना आपके पास है आप उसका थैंक यू करते जाओगे, तो वो तो लूज नहीं करोगे, एटलीस्ट आप वो तो लूज नहीं करोगे, ये आपकी अबंडेंस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना? What Buddha said, that you have no cause for anything but gratitude and joy. बुद्धा सेड कि जीने का, लाइफ का और कोई कॉज ही नहीं है, बल्कि ग्रेटिट्यूड एंड जॉय, शुक्राना और खुश रहना और थैंक यू करते जाना, करते जाना। ये सब उसने लाइंस लिखी हैं रिलीजन से। देखो अभी बुक में वो क्या कर रही है? स्पिरिचुअलिटी को दिखा रही है, साइंस को समझाया अभी न्यूटन्स लॉ से। तो जो यूनिवर्सल लॉ है, शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम ऑल एंगल्स, सो दैट ये जो आपका लॉजिक है ना, जो लॉजिकल ब्रेन होता है हमारा, जो बार बार क्वेश्चन करता है ऐसे कैसे हो जाएगा विजुलाइज करने से, ऐसे कैसे हो जाएगा लिखने से, ब्लेसिंग्स, कुछ नहीं होता है ये सब। ये जो हम फाउंडेशन कर रहे हैं, ये जो भी हम डे 0 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो आपका लॉजिक माइंड है ना, वो चुप हो जाए कि हाँ यार लॉजिकल है, बात में कुछ है, बात है कुछ इसमें, मैं करके देखती हूँ, करके देखता हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे नए भी हैं या फिर पुराने हैं, नए हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत रिक्वेस्ट है कि ट्राई करो, जरूर 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 ट्राई करो। पूरे 30 डेज इस बुक को सरेंडर कर दो, ये सोच के कि देखता हूँ करके या देखती हूँ करके क्या होता है। जैसे ट्राई इट ऑन का क्या मतलब होता है? आप गए हो मॉल में, आपको कुछ अच्छी सी टी शर्ट पसंद आई है, अब आप ऐसे तो नहीं ले लोगे ना, ट्राई करोगे। ट्राई करने के लिए आपको पुरानी टी शर्ट उतारनी पड़ेगी, उसके ऊपर तो नहीं ट्राई करोगे, नहीं तो फिट ही नहीं आएगी। तो जो भी आपने आज तक अपनी बिलीव्स रखे हैं, जो भी आप आज तक सोचते आए हो, उसको थोड़ा सा साइड कर दो और इस बुक को सरेंडर कर दो। जो बुक कह रही है वैसा फॉलो करो, वैसा फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, थैंक यू करो, और फिर देखो अच्छी लगेगी तो अच्छी बात है, रख लेना टी शर्ट, नहीं लगेगी तो ठीक है, इट्स ओके, बट ट्राई करो, ट्राई करना चाहिए। आए हैं तो फिर हम उसको पूरी शिद्दत से करेंगे। ठीक है? सो व्हाट Lao Tzu said, that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Yes, so if you rejoice in the way things are, यानी जो मेरे पास है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ, I'm very very happy with whatever I have, the whole world will belong to you. Krishna said, whatever he is offered, he accepts with joy. या कहते थे ना कृष्णा कि जो मेरे को मिल गया थैंक यू, उसका बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते थे। वो 2-4 दाने भी सुदामा राइस के दे गया था तो ही एक्सेप्टेड विद जॉय, राइट? सो ये सारे हमने, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, सब हमने सुना हुआ है। वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है ताकि आप इस बात से सेटिस्फाई हो जाओ कि हम कोई यहाँ रिलीजन नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ कोई साइंस नहीं पढ़ रहे, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसको आप स्पिरिचुअलिटी समझना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी से समझ लो, साइंस से समझना चाहते हो साइंस से समझ लो, वैसे दिल मान रहा है तो दिल से समझ लो। पर बात यही है, सिंपल सिंपल, कि whoever has gratitude will be given more, whoever does not have gratitude, whatever she or she has will be taken from him or her। वही पनिशमेंट भी मिल सकती है आपको, आप कर्मा सही नहीं कर रहे हो, कर्मा अच्छे कर रहे हो तो पॉइंट अपने ऐड करते जा रहे हो थैंक यू के, तो आपको थैंक यू पॉइंट्स ऐड करने हैं, पॉइंट्स ऐड करते जाओ, थैंक यू करते जाओ, पॉइंट्स ऐड करते जाओ, और जितने पॉइंट्स का आपका ड्रीम है आपको वहां तक पहुंचना है। ठीक है? तो किंग डेविड, आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट सिस्टम थोड़े दिनों में, अभी आएगा ना तब बताऊंगी।
King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and earth. या उसने भी किंग डेविड ने भी यही बात की थी. Thanks to the whole world. Thanks दो. ठीक है ना? And Jesus said thank you before he performed each miracle. From the Australians Aborigines to the African Masayan Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, or Maori, the practice of gratitude is the very root of the most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. So what Tikuzmi Tecumseh शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर क्या बोल रहे हैं कि सुबह उठते ही मॉर्निंग में उठते ही गिव थैंक्स फॉर द लाइट फॉर योर लाइफ एंड स्ट्रेंथ. राइट, हम उठ गए सुबह, यही ही बड़ी बात है. कितने लोग उठे ही नहीं. तो give thanks for the morning light, give thanks for your life, give thanks for the strength that you have when you wake up, give thanks for the food, for the joy of living. और अगर आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा ना थैंक्स करने का, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है. The fault lies with yourself. So history is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, S.O. Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. तो जितने भी ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स थे, इन सबको पता था, इन सबको पता था ग्रेटिट्यूड क्या होता है. ऐसे नहीं बन गए इतने महान ये, ऐसे नहीं इनके नाम इतने पॉपुलर है. इन सबको लॉ पता था. गांधी जी को भी लॉ पता था, मदर टेरेसा को भी लॉ पता था. क्या कह रही थी मदर टेरेसा सीक्रेट मूवी में, सुना था ना कि हाँ अगर वॉर के अगेंस्ट रैली है तो मैं नहीं जाऊंगी, हाँ अगर पीस की रैली है तो मैं चलती हूँ. बोला था ना. सबको पता था. आइंस्टाइन के बारे में आप अभी पढ़ोगे, न्यूटन के बारे में हमने पढ़ ही लिया है ना. अभी देखते हैं. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, आपको साउंड आ रही है क्या बैकग्राउंड में काफी, निहित की? नहीं ओके नहीं, पर तेरी क्लियर है वॉइस, इसलिए कोई ठीक. दिक्कत नहीं है. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. तो जब उनसे पूछा गया कि आपने ये अचीवमेंट्स कैसे करी, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि गिविंग थैंक्स टू अदर्स. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. तो आइंस्टाइन जो है ना 100 times a day थैंक यू बोलते थे. जो भी उन्होंने काम किया आज तक सबके लिए 100 times थैंक यू हर दिन बोलते थे, हर दिन. तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये रिप्लाई किया. तो वो क्या थे? वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स. Is it any wonder that so many life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. या तो उनको क्यों रिवील हुए इतने सीक्रेट्स, क्यों यूनिवर्स ने उनका इतना साथ दिया, क्यों उन्होंने इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी? क्योंकि वो ग्रेटफुल थे. एवरी सिंगल डे ही वाज ग्रेटफुल. 100 times. 100 times. Okay. So when Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. Okay, तो न्यूटन भी बहुत ही ग्रेटफुल थे और उन्होंने
उन सबको थैंक्स किया जो उनसे पहले रहते थे। सॉरी। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. तो होता क्या है कि हो सकता है पता हो, मैं बोलती हूँ बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा शुक्राना शुक्राना करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हुए हैं थैंक यू के ऊपर, शुक्राना के ऊपर। लेकिन सिर्फ सिर्फ सुनने से, सिर्फ समझने से, नॉलेज होने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि ग्रेटिट्यूड की पावर क्या होती है। हमें नहीं पता, हम 1-1.5 साल से कर रहे हैं सब लोग, किसने लोगों को पता है ग्रेटिट्यूड? कुछ नहीं पता हमें। हम तो अभी फिर से सीख रहे हैं, एक और अटेम्प्ट कर रहे हैं सीखने का कि हाँ क्या होती है ग्रेटिट्यूड की पावर। हम इस बुक को सरेंडर करके यूनिवर्स को थैंक यू बोल के बोल रहे हैं कि प्लीज हमें सिखा दो कि ग्रेटिट्यूड की पावर क्या होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? प्रैक्टिस। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, राइट? टू to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. You have to practice it. We will stop here now because 3 minutes are left. So anything, any doubt you have, we can discuss. हेलो। Hi. हाय। मैं बस बोलना चाह रही थी इसके अंदर शुरू में मतलब जो हमने कृष्णा जी के बारे में बात करी, मतलब Hmm. एक्चुअली शायद हमारा एजम्पशन हमेशा से ये रहा है कि ना वो भगवान है। Hmm. भगवान है तो इसलिए शायद कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर हमने बस उन्हीं को मतलब एज्यूम किया कि वही सब कुछ कर सकते हैं। मतलब तो बस मुझे ये लगता है कि ठीक है, भगवान तो भगवान ही है, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, बट हाँ मतलब वो जो चमत्कार दिखा सकते हैं वो चीजें मतलब कुछ कुछ थोड़ी बहुत हम कोशिश करें तो हम भी कर सकते हैं। Yes, yes. तो मतलब हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। हाँ और मतलब, हाँ बोल बोल। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब ना वैसे मैजिक में लॉजिक नहीं लगाना है, बट क्योंकि मैजिक स्टार्ट करना है तो उससे पहले ना अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा मतलब चुप कराना है। उसको भी खिलाना है। हाँ उसको भी खिलाना पड़ेगा तभी जाके वो चुप होएगा, हाँ। बिना उसके वो चुप नहीं होने वाला। तो उसको खिला देना पहले, थोड़ा उसको समझा देना उसको, तब तभी वो शांत आएगा। क्योंकि अगर मैजिक के बीच में अगर कभी लॉजिक वाला जाग गया तो मैजिक का काम सारा वो पानी फेर देता है, हम्म। फिर होती नहीं है, फिर हम उतना ही दूर हो तभी जाते तो हैं चीजों से। तभी तो ये फाउंडेशन में सारा समझा रही है कि ये लॉजिक है, हाँ। ये साइंस है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो इसीलिए लिखा है ताकि जब हम असाइनमेंट करने लगे तो हमारा लॉजिकल माइंड ये ना बोले कि अरे इससे कुछ नहीं होता, ये क्या ब्लेसिंग लेने से हो जाएगा, ये क्या मैजिक रॉक लेके कर रहे हो तुम, क्या क्या है लॉजिक। ये जब तुम्हारा लॉजिकल माइंड ये सब बातें करने लगेगा ना, उसको रोकने के लिए ये पूरी फाउंडेशन बनाई गई है बुक में। इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेके उसको समझ रहे हैं और कर रहे हैं, और लॉजिकल है भी। जब तक मैं किसी चीज हम्म। को अप्रिशिएट नहीं करूंगी वो बढ़ेगी क्या मेरी लाइफ में? अभी हम और इसके बारे में बात करेंगे कल। 1 मिनट बचा है, हम ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं। Sure. ओके, so let's do gratitude. Fold your hands, close your eyes, be grateful. Thank you, thank you, thank you, universe, for a beautiful and amazing life. Thank you for my perfect health, my brain, my heart, my eyes, which are working so perfectly fine that I am so healthy and energetic. Thank you to my family members, to my parents who brought me into this beautiful world. Thank you, thank you, thank you, Sun, for giving us tremendous energy. To the plants for the air they are giving us, for the food they are giving us, to Mother Earth for taking our weight and giving us tremendous food, energy, everything. Thank you to the water that we are drinking, that we are using from morning till evening.
Thank you, space element, so I can move around and walk. Thank you, thank you, thank you for my children, for everything, for all the money that I have received in my life, for my salary, for my job, for the clothes that I wear, for the house in which I am living. Thank you to my bed and mattress so I can sleep comfortably. Thank you to the knowledge, to this book, to Rhonda Byrne, to Zoom, to internet. So we are connecting together. Thank you, thank you. Thank you everyone for joining this beautiful journey. Let's have, let's be grateful and let's have commitment to